Okay, all of you listen here. Myself, Professor Ravindra Gupta from Sonupant Dandekar Junior College, Algar. Today we are starting with a crop production, that is agriculture science and technology. In that 10 number chapter, very interesting chapter. The name of the chapter is Agrotourism. Okay, the weightage of this chapter on a board pattern, it is minimum 2 marks without option, and with option the weightage of this chapter is 6. Means total weightage of this chapter is 6 marks in an examination of a 12th crop production, that is HSC board paper. So as a starting with the name of the chapter, that is agrotourism, you can see the picture of that agrotourism on your screen. You will get an idea what's the meaning of agrotourism. It is a combination of two things, that is agro means farmers think whatever they can take from their farm, that is agriculture, and tourism means the business which is totally dependent on the agriculture base, so that is called it as the agrotourism. So the simply meaning is the agrotourism, the combination of a combination with a tourist to attract and get a extra benefit for the farmer. Okay, so this will provide a extra benefit to the farmers because a farmers having a different type of product in their agriculture. So that is called it as a agrotourism, which you can see in this picture. That farmer have found a one type of small home for the tourist, then some type of activity in their area, and there are some type of activity in a water area. Okay, so this is called it as the agrotourism, which will benefit it for the farmer also. Okay, so now we are starting with the 10.1, that is concept and features of an agrotourism. In that 10.1, concept of agrotourism. A term agrotourism is a farm-based businesses that is open to the public, particularly to the farm. Okay, normally ये जो भी business है वो normally कौन से people कर सकते हैं, farmers, because this is totally dependent on the farm area. This specialized agrotourism design generally offers a seeing site. You can see that कि farmers के जो भी area है वहाँ पर कैसे type का farming वगैरह हो रहा है, अगर वहाँ पर कोई water वगैरह है तो वहाँ पर fishing activity कैसे हो रहा है. Okay, so it will provide a seeing site, things to do or a gift to buy, and open to a public also. You can see that there are so many things to do. You can see that there are sports activity related to water are doing the people. Then there are some type of games are there. Then there is a site for staying and a home for their refreshment. And there is an activity like a tractor. Okay, so this activity was. Then there is a bird observation, fish observation, different type of. So this is nothing but it is a sightseeing, things to do. There are different things they can do, give. So there are so many type of variety are taken in a farm in a, so they can take purchase the things from that farm area. So this is all about that agrotourism. Now agrotourism is not only a farm visit to get the knowledge, but also includes a good information to study. Means the students like we people, as we have already last time, last 2 years we have visited so many places. These are related with the agrotourism, जहाँ पर हमने अलग अलग places वगैरह visit किया था, वहाँ पर processing वगैरह वो लोग कैसे करते हैं वो हमने देखा था नासिक के अंदर. And इसके पहले हम लोग जहाँ पर गए थे वहाँ पर हमने farm area visit किया था. So that is a study. So we can study a different type of plant and we can see by our naked eye. Then research, if anything they can research. अगर किसी को research field में जाना है तो वहाँ पर research के लिए भी area provide होगा. If that area is bigger, just like 2 years ahead we have gone to something that is agrotourism से related, जो भी agriculture था वहाँ पर हमने visit किया था. So वहाँ पर research के students भी होते हैं. Then there are sales. Okay, farmer can sell their product and the different type of activity they can do, which you can see in this picture. So
urban people, they can attract on that place, etc. Nowadays, urban people's awareness toward such activity is increased, and there are interest in a gaining knowledge of agriculture. Because we know that कि बॉम्बे जैसा जो भी एरिया, अगर हमारे यहाँ पर ही 2 hours में अगर हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी गॉन टू मुंबई. तो मुंबई में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है वो वहाँ पे देखने नहीं मिलेगा. सो दिस पीपल आर बोर विद दैट थिंग. ओके, वो अर्बन एरिया में बहुत ही बोर हो गए. सो अल्टीमेटली दे हैव अ साइलेंट थिंग. ओके, जैसे कि ये फार्म्स वगैरह है, ऐसे एरिया में जाना, वहां पर जो थिंग्स उन्होंने नहीं देखे, ऐसे थिंग्स को देखना उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है. सो देयर इज अ इंटरेस्ट इन गेनिंग नॉलेज ऑफ agriculture to the urban people. So urban people can attract on this farm. Now the next part, agrotourism is an innovative agriculture activity related to both tourism and agriculture. जहाँ पर टूरिज्म से रिलेटेड भी इनोवेशन होना चाहिए एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ इनोवेशन होना. It has a tremendous capacity to create an additional source of income and employment opportunity to the farming community. मतलब दो द पीपल जिसका फार्म है उनको भी, और प्लस इफ यू कैन सी दिस पिक्चर कि अगर ये इतना बड़ा बिगर फार्म है और यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटी है, सो इनको फूड प्रिपेयर करना है, इनके जो भी एक्टिविटी है उनको मैनेज करना है. So there are different type of activity. Then यहाँ पर tractors वगैरह है. So many people are involved in that agrotourism. So farmer also benefited, and a different type of people who are living in that area. So they can also get a opportunity and a employment and extra income. जो कि वो उनका extra income. Then several countries have transformed their economy by developing their tourism potential. Today, the concept of traditional tourism has been changed. Okay, traditional tourism यानी कि हमारे नियर बाय में छोटा मोटा जो भी अलग अलग टाइप के आपने देखे कि वाटर स्पोर्ट्स है, एक्सेल वर्ड वगैरह है, तो ऐसे थिंग्स पर लोग जा जाके हमेशा बोर हो जाते हैं. तो ये एक कुछ नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पर लोग अट्रैक्ट होते हैं. Some new areas of tourism have been emerged like agrotourism, which you can see in this picture. आपको यहाँ पर पूरा एक्टिविटी. Promotion of tourism would bring many direct and indirect benefit to the people, particularly in a farming community. Because ये पूरा का पूरा हम लोग farming area में कर रहे हैं, agriculture area में कर रहे हैं. So ultimately this will provide a additional income source to the farmers के लिए ये additional income का source. Then the next part is, that is 10.1.2, that is definition. So in that, agrotourism refers to any enterprise or a business that links agriculture with the product, services and experience in a tourism. यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन, वहाँ के प्रोडक्ट सेलिंग, सर्विसेज, वो कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उससे, एंड एक्सपीरियंस इन टूरिज्म. टूरिज्म के अंदर जिसको एक्सपीरियंस है, सो अल्टीमेटली ऐसे पर्सन और एग्रीकल्चर वाले पर्सन कॉम्बिनेशन होके ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एग्रोटूरिज्म. Now, agrotourism can be defined as an activity that brings visitors to farm. Okay, visitors को farm visit करने मिलेगा, which you can see in this picture. Then some example of activity associated with the agrotourism are farm resort, which you can see in this picture. Leisure fishing. Okay, you can see that यहाँ पर अगर बहुत बड़ा एरिया प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर वो जो पर्सन है, they can come in, तो ये फिशिंग भी कर सकते हैं. Hunting ground, unique lodging. Okay, you can provide a places for their रहने के लिए वगैरह जो भी है, वहाँ पर स्लीपिंग वगैरह, रेस्ट रूम वगैरह प्रोवाइड करना है, उससे भी एडिशनल इनकम आ सकता है. Then food restaurant. Okay, so the farm से रिलेटेड जो भी नए नए डिशेस वगैरह है, फ्रेश डिश जो भी है, वो हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं. फार्मर्स को जो भी है, then market of a local handicraft. Okay, वहाँ के जो लोकल पीपल है, इफ दे आर मेकिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल हैंडक्राफ्ट जो कि हैंड से बनाए हुए, जैसे कि टोपली वगैरह है, तो वैसे ही छोटे छोटे घर में रखने वाले जो भी शो के पीस होते हैं, तो वो सब वो प्रिपेयर वगैरह कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली दे गेट आल्सो अ जॉब फ्रॉम दिस एरिया. होम इंडस्ट्रीज, ओके, एंड अदर leisure activity rewards the revival of a local people lifestyle. Okay, so ultimately ये लोकल पीपल के लाइफस्टाइल को कॉम्बिनेशन करके और वहाँ के जो भी प्रोडक्ट है उनका
उसका सेलिंग भी होगा, एंड प्लस दैट फार्मर्स आर बेनिफिटेड विद एक्स्ट्रा इनकम when they don't have a work in their agriculture area. Now the next part, agrotourism is defined as a travel that combine agriculture and rural setting with the product of agriculture operation, all within our tourism experience. यहाँ पर टूरिज्म के अंदर हम लोग एग्रीकल्चर को कंबाइन करें और रूरल सेटिंग यानी कि रूरल एरिया जो भी है इसको हम लोग पूरा, और प्लस उसके जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुए जो ऑपरेशन वगैरह होंगे और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, लाइक जैसे कि वाटरमेलन फेस्टिवल, इफ अगर हमने यहाँ पर ही हमारे आसपास में वाड़ा के अंदर नानी गांव सांगे गांव करके वहां पर शिवार एग्रो टूरिज्म कर, सो वहां पे आप लोग जब विजिट करोगे, सो इन इन जनवरी, ओके, इन दिसंबर एंड जनवरी एरिया, वहां पर एक छोटा सा वो लोग फेस्टिवल वगैरह फॉर्म करते हैं, तो इन दैट एरिया दे नेम एज अ वाटरमेलन फेस्टिवल, जहां पर उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी भी होता है. सो अल्टीमेटली सो मेनी पीपल्स आर एंगेज इन दैट, दे गेट अ एम्प्लॉयमेंट एंड दे गेट अ मनी आल्सो फ्रॉम दैट, एंड ऑल आर फार्मर्स, ओके, वहां पर जो भी होते हैं फार्मर्स होते हैं, सो अल्टीमेटली दे गेट अ extra benefit from that area. Now, agrotourism is an agribusiness activity when a native farmers or a person of that area offers a tour to their holding to allow a person to view a growing, harvesting and processing of a locally grown crop. Okay, वहां पर लोकली जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनके ग्रोइंग कैसे होगा, हार्वेस्टिंग कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है इन अ लोकल ग्रोन क्रॉप, तो ये सब हम लोग वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं इन दैट एग्रो टूरिज्म एक्टिविटी. सच एज कोकोनट, नॉर्मली यहाँ पर जो प्लांट हमको सिलेक्ट करने चाहिए वो नॉर्मली प्लांट कैसे होने चाहिए, सो कोकोनट, सो दे कैन पर्सन जो भी आएगा टूरिस्ट वो वहाँ अट्रैक्ट होगा, सो दे कैन बाय आल्सो दैट कोकोनट और वहां पर वो ड्रिंक भी कर सकते हैं. देन पाइनएप्पल है, sugar cane है, corn है, etc. or any other produce to which they would not unknown earlier in their city or a home country. Okay, जो होम कंट्री में उनको जो भी प्रोडक्ट वगैरह है या तो उससे रिलेटेड फार्म वगैरह जो देखने नहीं मिला था, ग्रोइंग नहीं देखने मिला था, हार्वेस्टिंग नहीं देखने मिला था, प्रोसेसिंग नहीं देखने मिला था, तो वो सब उनको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. Agrotourism, often the farmers would provide a honey stay opportunity along with the education. तो यहाँ पर एजुकेशन तो प्रोवाइड हो रहा है एज वेल एज यहाँ पर हम लोग स्टे के लिए जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इससे भी हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट होने के चांसेस हो सकते हैं एग्रोटूरिज्म से फार्मर्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, agrotourism and ecotourism are closely related to each other. Okay, agrotourism and ecotourism दोनों भी एक ही चीज. Okay, ecotourism. Now, ecotourism is provided by tourist company. जो ecotourism है वो नॉर्मली टूरिस्ट कंपनी जो होता है वो प्रोवाइड करता है. While in agrotourism, farmers offer a tour to their agriculture farm premises and provide entertainment, education and fun-filled experience to urban people. इको टूरिज्म में जैसे उससे रिलेटेड जो पर्सन होते हैं वो इको से रिलेटेड टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही एग्रो टूरिज्म में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिसका फार्म है या तो जिसने वो इन्वेंट किया, सो दैट फार्मर कैन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट दैन एजुकेशन, जो आ रहा है उसको एंटरटेनमेंट दैन एजुकेशन, फन फील्ड एक्सपीरियंस मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी वगैरह जो भी है वहां पर प्रोवाइड. नाउ एग्रो टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव to tourists based on sustainability, restoration of a culture. वहाँ की जो कल्चर है उसको डिमिनिश आए यानी कि वो पेरिश भी नहीं होगा और उस कल्चर को भी हम लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं. दैन हेरिटेज एंड अ ट्रेडिशनल रूरल एरिया विच यू कैन सी दैट, जो हमारा महाराष्ट्र का तारपा वगैरह जो भी है आदिवासी जो भी ये है, सो वहाँ पर हमारा जो एरिया दैट इज एसटी में आता है, सो अल्टीमेटली यू विल गेट दैट कि यहाँ पर ये जो तारपा नृत्य है, ओके, सो ऐसे टाइप के जो भी नृत्य वगैरह है वो हम लोग वो पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं डांस के फॉर्म में. सो दिस इज द ट्रेडिशनल वे, ओके, जो कि पेरिश होने से हम लोग बचा सकते हैं. एंड अल्टीमेटली दो द पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट
ओके, ये जो भी पीपल्स इसके अंदर रूरल कल्चरल है, उनका हेरिटेज है, इसके अंदर जितने भी पीपल इन्वॉल्व है उनको भी उससे रिलेटेड मनी प्रोवाइड होगा। दैन हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो भी थिंग्स है वो अगर सेल हो रहा है तो अल्टीमेटली द पीपल विल गेट द बेनिफिटेड फ्रॉम दैट एरिया। सो दैट इज नथिंग बट एग्रो टूरिज्म। इको टूरिज्म से ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट यहाँ पर और भी अच्छे से हम लोग फार्मर्स जो भी है उनको ये मनी प्रोवाइड कर सकता है, एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड कर। नाउ इन महाराष्ट्र एग्रो टूरिज्म को जो मेन फोकसिंग पॉइंट है, जो इसको सपोर्ट करने वाले जो पार्ट है, सो इन महाराष्ट्र देयर आर टू पार्ट। ओके, सो एमटीडीसी। ओके, MTDC is an abbreviation of Maharashtra Tourism Development Corporation. The full form of MTDC is Maharashtra Tourism Development Corporation. Now, what's the role of Maharashtra Tourism Development Corporation? It is responsible for development of tourism in Maharashtra. So, इनका भी एक रोल है. You can see that कि अगर आप लोग MTDC, that is Maharashtra Development Tourism के साइट पर गूगल पे सर्च करोगे तो you will get this type of आपको वहां पर एक ब्राउजर ओपन होगा ऐसे टाइप का, जहां पर आप लोग यू कैन सी दैट कृषि पर्यटन योजना अंतर्गत नोंदणी करावयाचा मीन्स यहाँ पर जो भी फार्मर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड द पीपल जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो ऑनलाइन बुकिंग करके वहां पर है, वहां पर कौन से फीचर्स वगैरह है, व्हाट द एक्टिविटी वगैरह है, वो भी आपको यहाँ पर दोनों जगह पे मिल जाएगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया महाराष्ट्र से रिलेटेड एक पॉइंट, दैट इज महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनके साइट पे भी आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आफ्टर दैट एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड अगर पूरा इंफॉर्मेशन लेना है, उससे रिलेटेड हमारे एरिया में महाराष्ट्र में या टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट में कौन से एरिया में एग्रो टूरिज्म है, उसके रेट क्या है, कैसे आपको वहां पर विजिट करना है, सो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो रिमेम्बर दिस पॉइंट करके यहाँ पर महाराष्ट्र इज अ पायोनियर स्टेट to develop and promote agro-tourism in a country. Agro-tourism Development Corporation, that is ATDC, is incorporated in 2005 at a Palshi Wadi, okay, Taluka Barmati, is Pune. At a ATDC, acts as an umbrella organization for agro-tourism in Maharashtra. Means महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने एग्रो टूरिज्म सेंटर है, कितने लोग हैं, कौन से एरिया में है, सो ऑल दिस एक्टिविटी यू विल गेट दैट। ओके, और इससे रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन लेना है, कोई फार्मर्स वगैरह है, अगर उनको उनके यहाँ पे उनके एरिया में ऐसे कुछ फॉर्म करना है, लाइक दैट एग्रो टूरिज्म में हमने अलग अलग टाइप के फीचर्स वगैरह देखे, तो आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करके जो फार्मर्स वगैरह है दे कैन गेट अ रजिस्टर यहाँ पे आप इस साइट पे। ओके, साइट का नेम है दैट इज एग्रो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये अगर हमने टाइप किया, जस्ट गूगल के ऊपर सर्च किया, तो आपको वहां पर उनका साइट मिल जाएगा एग्रो टूरिज्म के इंडिया का। तो अल्टीमेटली वहां पर हम लोग जो भी फार्मर्स है दे विल गेट आइडिया दैन हमारे नियर बाय में अगर टूरिस्ट है तो टूरिस्ट को कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो, दैन उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से प्लेस में एग्रो टूरिज्म है, वहां पर उनका नंबर क्या है, दैन उस नंबर पे कॉल्स करके हमको पूरे इंफॉर्मेशन, इमेजेस वगैरह सब हमको इस साइट के ऊपर। और किसी को अगर फॉर्म करना है फार्मर्स को, तो अल्टीमेटली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके वो लोग वहां पर भी अपलोड कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली द टूरिस्ट कैन अट्रैक्ट टू देयर प्लेस। So this is all about that 10.1 concept of feature in that agro-tourism. So this is all about today's lecture. Now if any students have any question, okay, इस chapter का जो भी total weightage है that is 6 marks with option. अगर कोई farmers वगैरह आप में से हैं, अगर उसको डेवलपमेंट वगैरह करना है, ऐसे कुछ फॉर्मेशन करना है, तो मैंने आपको यहाँ पर 2 साइट बताया है, वहां पर जाके आप लोग आइडिया भी ले सकते हो, दैन आप लोग विजिट भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर अलग अलग साइट दिया है नियर बाय, हमारे यहाँ पर नियर बाय में कौन से एग्रो टूरिज्म है, वहां पर विजिट करके भी आप लोग देख सकते हो। एक तो मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बताया कि अगर आप लोग वाड़ा, हमारे यहाँ पर पास में ही वाड़ा है, ओके, वाड़ा के पहले मनोर से जैसे आप लोग आगे जाओगे तो वहां पर सांगे करके गाँव, ओके, दैट इज अमरापुर जो भी है, वहां से जाते ही आगे आपको सांगी करके गांव मिलेगा, वहां पर शिवार एग्रो टूरिज्म करके, ओके, वहां पर भी इन्होंने छोटी मोटी एक्टिविटी की है। सो व्हेन यू विजिटेड दैट प्लेस यू विल गेट आइडिया कि अगर आपके पास फार्म है
and you will not get that much benefited from that farm. So ultimately, if you develop this type of thing in a future, so ultimately the urban people will attract to the your place, and ultimately you will get a benefited from that area. So this is all about today's lecture. If any students have a question regarding this topic, so you can comment on a comment box, or मेरा number है, that is my name प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, और मेरा नंबर 9273887800 ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करो. So ultimately I will give you a full information whatever your doubts are. Thank you students.